question. It is saying that persons A, B, C, D, E, F, G are sitting equidistant from each other around a circular table. So again we have a circular table here. So we have a circular table. They are sitting equidistant from each other around a circular table. Consider the following. This is the question and two statements are given. Who is sitting on the immediate left of A? Let's say this is the circular table. These are the two statements that is given to us. We need to answer this particular question based on the statements. We know that there are 6 people sitting here. There are 6 people sitting here. Who is sitting on the immediate left of A? Immediate left of A में कौन बैठा है ये बताना है. Statement 1, if I am using statement 1 alone, B is sitting opposite to C and D is sitting opposite to E. So B is sitting opposite to C and D is sitting opposite to E. Now D and E can be here, D and E can be here also. So D यहाँ है, E यहाँ है, or else it is like this, or else D and E can be here also. तो कहीं भी हो सकते हैं D and E. For now, this is what I can gather from statement 1. इतनी ही information थी statement 1 में. तो क्या मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि immediate left of A में कौन बैठा है? अभी मुझे नहीं पता है कि A किस पोजीशन में है, इसीलिए बस स्टेटमेंट 1 यूज करके तो आई कैन नॉट आंसर. स्टेटमेंट 2 देखते हैं. स्टेटमेंट 2 सेज F इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B. यहाँ से समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट 2 यूज करके तो नहीं कर सकते, बिकॉज स्टेटमेंट 2 में बस ये पता है कि B और F कहाँ बैठे हैं, A कहाँ बैठा है ये तो फिर भी नहीं पता. तो आई विल हैव टू कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट्स. If I am combining both the statements, that means F is sitting on the immediate left of B. Immediate left of B is F. So if this position goes to F, तो यहाँ D और E तो नहीं बैठेंगे. If this position is F, you will have F here and opposite will be A. Now I know when I am combining both the statements, now I know that where is A sitting. But do I know who is sitting on the left of A? Left of A can be E, can be D, because A is facing this side, let's say. So if A is facing this side, then it was given है ना कि facing the center of the table. इसीलिए ये मत सोचना कि सर ने क्यों assume कर लिया. It was given in the question. So if A was facing this side, left of A will be this position, and in this position you have D and E sitting. So we cannot by certainty say that who is sitting on the left of A. इसलिए your answer here is both statement 1 and statement 2 are not sufficient. वहीं पर remember, अगर यहाँ पर दिया होता who is sitting on the right of A, then by certainty we could have said that C is sitting on the right of A. So यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आए. ध्यान रखना है, बनाना है एंड फिर देखना है लेफ्ट पूछा है या राइट पूछा है. ठीक है, तो अगर लेफ्ट को राइट कर दिया तो आंसर आ जाता. बस यहाँ लेफ्ट पूछा था एंड इन लेफ्ट आई एम अनसर्टन बिकॉज ऑफ D and E बोथ एज द पॉसिबिलिटी, इसलिए वी कैन नॉट आंसर.